a charismatic leader, and a visionary. Very pleasant evening to our distinguished guests, faculty, staff, and dear students. We welcome you all to celebrate 12th Shri Yasaswy Memorial Day of ICFI Business School. To grace the occasion, we have Mr. Ram Gopal, Chief Executive Officer, as the chief guest, and 3 times international awardee Dr. Bhavesh Bhatia, founder of Sunrise Candles, as a guest of honor. I request our guest, Mr. Ram Gopal, Dr. Bhavesh Bhatia, Director IBS Pune, Professor Jyoti Tilak, Deputy Director Academics and Deputy Campus Head, Professor Colonel N. Ram Gopal, Deputy Director Placements, Professor Soumitra Samadar, to come up on the dais. I request Professor Jyoti Tilak to welcome our chief guest, Mr. Ram Gopal, with a bouquet of flowers. To welcome our guest of honor, Dr. Bhavesh Bhatia, with a bouquet of flowers. Every auspicious occasion starts by invoking the blessings of Goddess Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. Continuing this tradition, I request our esteemed dignitaries on the dais to step forward and light the lamp. I invite Shanika. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडापहा शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयादा जयन्धकारापहा
हसते स्वाठिका मालिका विधाता ती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। May I request all the dignitaries to offer a floral tribute to our founder, Shri N.J. Yasaswy. I request all the dignitaries to be seated in the front row. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा This film will take you of an extraordinary visionary. We pay tribute to one of the most resplendent intellectuals India has ever seen. The iconic N.J. Yasaswy, the man who founded the Institute of Chartered Financial Analysts of India, ICFI, and ICFI Universities and ICFI Group of Institutions. He leaves behind him a huge network of educational institutions that will stand testimony to the adage, what can be imagined can be achieved. Born on 9th February 1950, Father Shri Nanduri Venkateshwara Rao, a school teacher, and Srimati Sithamma Garu, a homemaker, the quest of knowledge, the zeal to excel, was instilled in him right from his childhood. The spark of brilliance was evident in him right from his school days. Graduating from the Andhra University in 1969 with a BCom degree, he topped near impossible and repeated the academic feat in GA final in 1973. In 1977, he was given the Basu Foundation Award in 1973. A first-of-its-kind achievement and mentor crossed all boundaries as the most rewarding and enriching experience. Weekends at the NJY home was always known for his warm welcome to his circle of friends and associates. There would be a fruitful exchange of knowledge and fun, delicious home-cooked food, and engaging battle of wits with his mother. The grand old lady would voice her policy of the spiritual journey as all-encompassing, while her son would try to churn out hundreds of conversations why hard work and commitment to basic issues are more important than spirituality. N.J. Yasaswy was Mr. Yasaswy joined as a faculty member with Administrative Staff College of India in 1974's Accountancy Department.
The grandfather should study there, then the father should study there, then the child should study there, then the child's child should study there. A pioneer, a leader, and innovator, NJY created Andhra Pradesh's first private placement industry, first leasing deals, first stock market newsletters, first management consultancy, and the earliest traces of knowledge society. He loved knowledge, science, and new ideas that changed the world. Yet, he remained humble, always working with a motivation to do something different, to make a difference to the world of business, education, business education, and publications. NJ Yasaswy was, however, not one to court publicity. His favorite retreat was his corner chair, surrounded by his books and photos in plot number 19 Nagarjuna Hills, from where he generated ideas that changed the educational scenario. And his worthy emissaries emulated his ideals, touching the peaks of success and turning their mentors' dreams into vibrant realities. In the last 2 years, he started several new projects. Turning to his roots, giving his mother tongue and traditions a fillip, he ventured to promote Carnatic music, established B.Ed colleges, and also a unique initiative called C.P. Brown Academy, which is today successfully bringing timeless works of Telugu arts and literature within reach of the current generation. NJY achieved so much at just 61. For his unrivaled contributions to education, Shri Yasaswy truly deserves a place in the history of the business scenario of Andhra Pradesh and Indian education in general for his life's work. Thousands of employees of the ICFI group and hundreds of employees, including people, grew like saplings under the banyan tree called ICFI, which spawned the biggest service sector boom in education, research, publication, and policy making. Some of India's most successful fund managers, analysts, bankers, journalists, software and management professionals, thought leaders, and thinking elite have some connection or the other with ICFI. Either they worked at ICFI or they studied at ICFI and its associate wings. The causes he expounded were noble, and it is the duty of his protégés to carry them forward. This is the greatest tribute one can pay to him, standing as living testimonies of his life's mission. I request the dignitaries to kindly come up on the dais, and I invite our director, Professor Jyoti Tilak, to kindly address the gathering. Chief guest of the evening, Mr. Ram Gopal, CEO of Barclays Bank India. Our guest of honor today, Bhavesh Bhatia Sahab, Founder President Sunrise Candles, distinguished guests, my esteemed colleagues, and all the wonderful students of IBS Pune. My greetings to all of you. I thank you all for your presence this evening to pay our tributes to our visionary leader and pioneering educationist, Professor Shri N.J. Yasaswy. When we think of the heroes of any country, we typically think of political leaders, business leaders, military leaders. To build a great nation, we need a great society. And to build a great society, we must develop individuals. We cannot do this by giving doles or making unrealistic promises. We can do this only by enabling people with the means and tools to build their own careers. Mr. Yasaswy's vision was to make this happen through quality education. Just like there is diversity in nature, different people have different aspirations,
priorities, and natural inclinations. Mr. Yasaswy wanted to give the young people an opportunity to discover and develop themselves through education and realize their full potential. His vision was to enable millions of people to be trained to take on global responsibilities. In implementing his vision, Mr. Yasaswy faced major hurdles. Decisions on content and curriculum were then made not by educational institutions but by people in power. Education was disconnected from reality. Mr. Yasaswy fought against the system which was not allowing the growth of young people. He decided to teach students what they wanted to learn and not some outmoded syllabus. He realized that performance of any educational institution should be judged by market acceptance of students more than anything else. To that extent, more than 65,000 families, those of our alumni, are thriving examples of his noble vision or desire to allowing the latent quality of the country to come to fore. For him, it was never private versus public universities. It was about giving freedom to universities to offer a range of courses to students, designing industry-relevant courses, enabling students with technology and communication skills to make their mark in the dynamic and ever-changing workspace, be they national or global. Professor Yasaswy was very well aware of the fact that India would grow in stature and in terms of business volumes. He was also conscious of the fact that the country would require a huge number of trained people to manage growing businesses and also business growth. It would not be possible for just the IIMs and few others to cater to such a huge requirements. With this in mind, he established a chain of business schools in 1995 after managing the affairs of the CFA of India. Research and publication and management was also a priority for him. He nurtured this activity to the fullest. While he was alive, he used to himself personally review the progress that we were making at every quarter. I'm very happy to inform the gathering here that IBS is one of the largest contributors to business cases and to the Case Centre UK, which was earlier known as the ECCH. It has a depository of more than 57,000 business cases, of which more than 6,000 have been contributed by IBS alone. Only HBS, Harvard Business School, and INSEAD have contributed more. IBS cases are followed in more than 800 business schools across 75 countries. This is a testimony to the fact that the connect between industry and education is inevitably and absolutely closely connected. The other priority of Professor Yasaswy was to establish and sustain a very healthy and mutually beneficial relationship with industry. He was of the belief, and we remain steadfast to this belief, that without involving the industry and business in our efforts, we will not be able to serve the industry suitably and adequately. We are happy to share that we have sought and received and continue to do this help plenty of guidance from industry in evolving our curriculum, in our delivery of various cases, in developing cases. We also try to organize guest sessions, practicing manager sessions, invite industry for discussions on syllabus restructuring, on academic advisory matters, guiding our students through internships so that this institute is grounded to current business realities. As a result of such close and regular interaction with industry and businesses, IBS Pune has had more than 99% student placements for many batches in the past and continue to do so even in the recent past, especially post-COVID. For the last 7 years, we have placed students even internationally. IBS Pune has been among the few places where international destinations and international matters have become part of our syllabus in terms of guest sessions and alumni contributions from across the globe also. Over time, as more private universities are being set up, competition will increase and students will go where they get the best education and return on their investments through their livelihood that they are able to carve therefrom.
This will take care of quality standards. This is what Sri N.J. Yasaswy was fighting for. This is what he stood for. And when we read the National Education Policy 2020, in many ways it was a tribute because they had incorporated many of the things that Mr. Yasaswy had thought of more than 20 years ago. The presence of two wonderful human beings here today is a huge encouragement to all of us, and we are trying our best to perpetuate the legacy of Professor Yasaswy in this endeavor and in this journey of ours. So I welcome both of you. My deep appreciation to Mr. Ramgopal and Mr. Bhatia for agreeing today, and despite their busy schedule, they have traveled since morning, displaying their deep commitment to leadership development. This is exactly what we are trying to do. We are trying to prepare future leaders in our own humble but sincere way. The IBS motto, as mandated by our founder, is Merit of Ethicus, which implies merit with ethics. In this, today I salute Sri NJY on behalf of all of us, the ICFI family, and pray that his vision will continue to guide ICFI and us. Thank you, ladies and gentlemen, for being here. I once again welcome our august speakers and thank them for having agreed to share their thoughts with our students. I'm sure their inputs will go a long way in making NJ Yasaswy proud of all of us. Thank you. Thank you, ma'am. It is always an inspiration to listen to you. I take immense pleasure in introducing our esteemed chief guest, Mr. Ram Gopal. Mr. Ram Gopal has been Chief Executive Officer at Barclays Bank India for more than 6+ years and was also the Chief Operating Officer for more than 10 years. He has completed his Masters from the University of Chicago and has also attained the designation of Chief Financial Analyst. Sir is the member of Country Executive Committee and Chairman of the Operating Committee, where he was responsible for the design and execution of a country strategy that supports the financial performance and market position of Barclays Bank in India. Member of the Board of Barclays Technology Center and Barclays Shared Services, providing effective support to the country manager in the discharge of governance responsibilities of the shared services companies. Sir has also served as the Regional Head of Consumer Operations, Middle East and South Asia in Chartered Bank for more than 11 years, where he was responsible for establishing a predictive, customer-centric process environment, driving best-in-class risk performance, creating a competitive cost structure, and developing a pool of talented and competent personnel. He has also worked with Citibank as an Assistant Manager, Credit Operations. We are honored to have you here, sir, and we welcome you. I request sir to address the gathering.
myself, Director IPS, Professor Colonel M. Ram Gopal, Deputy Director, Professor Savitri, Guest of Honor, Mr. Bhavesh Bhatiji, faculty members, staff and students of ICFAR Business School, Pune. I deem this to be an absolute honor to be in front of you to deliver this memorial lecture. I was fortunate enough to meet Professor N.J. Yasaswy way back in 1992 when I was a student like yourself. This was in Puttaparthi. When I was in Sri Satyasai University pursuing my first MBA degree. When he was introduced to the dais, and this was a forum where alongside Professor Yasaswy, we also had other luminaries. And one thing that I recollect fondly from those days was you could immediately see when he was introduced that he had a brilliant track record in academics. He had also, by that time in '92, he had also done a stint in the government. I think he was responsible for Andhra State Trading Corporation in some capacity, I recollect. And he was an author. He was introduced on stage, and some of the books that we saw here, I think one of which I think was ready by then. And he had set up the CFA Institute for India at that point in time in conjunction with the CFA Society in the US. And, he was so articulate. Yeah, I'm good. He was so articulate, his demeanor so pleasing that sitting as a student listening to him, one couldn't be but blown away by his sheer brilliance. And I deem it to be my good fortune that after several years, now this is close to 35 years, I've had the good fortune of coming back here and reminiscing of that time. When I was called by Dr. Irfan to see whether I would like to be here and present this memorial lecture, I immediately jumped at it. But one of the things that I did was also looking at some of the past lectures, and something that caught me. This was not a lecture as much as a gentleman by name, I think Vivek Gupta ji. He had commented, because it was a Memorial Day celebration and there was an outpouring. There were close to about 30-40 comments on LinkedIn that I picked up. There was something about what Vivek Gupta ji had said that struck me, and I thought it would be appropriate for me to share that as well. And Vivek Gupta ji had written this reflecting, I believe, the success of ICFAR when they first published their first case study, I think way back in 2001 when IBS won their first case study. I think he was just reminiscing of that time. And something he said in the LinkedIn post when he was reminiscing of that time stuck with me, and that was what he said, Vivek Gupta ji said of late Professor Yasaswy's words. Believing in yourself is very important. Even ordinary people can do extraordinary things. Now, this is something that I have lived by, since the time that, like you as a student, I was listening to him about how it is possible for ordinary people to turn in extraordinary results. So I'm indeed very fortunate that I've had this opportunity to come and reminisce about that time, reminisce about what I felt of late Professor's presence in the audience, and generally about how he carried himself. Today, the keynote is on two topics that is close to me. These are my reflections on banking, my reflections on the journey that banks, or more generally, we're making on artificial intelligence. And the theme is
about reflecting on challenges and trends. 30 minutes and possibly I've took 5 minutes in just setting myself up, so maybe another 20 minutes or so. And my objective of going through this in such a special occasion is to kind of warm you up. And one of the things that when I joined the banking industry, though it was by accident, we wish that banking, at least now after 30 years, we wish that banking would also be like being a doctor or a lawyer, be treated as a profession with its own norms, with its own code of conduct, etc. And my hope as I reflect on challenges and trends in the industry is that people, the students here feel motivated that this is an industry that is ripe for disruption, and we'll speak about it in a bit more detail. And they can, if they put their mind and heart to it, can really go far. And that's my hope with this 10-15 minutes, glimpse around, giving you a glimpse around what the challenges and trends are. So where do I start? So let's start on banking. And the time is such that this is usually the time of the year when McKinsey comes out with their annual global banking report. And they have published something for 23. This was early in October. And I use some themes from them so that you not just have a perspective of somebody in the industry, but also the perspective of a global name like McKinsey, who follow close to about 1,000 banks in the run-up to this report. So the first and the foremost is the fact that thinking about the past few years, and I draw a line, maybe we could take 2020, that was the onset of the pandemic, right? I mean, if you were to think about how the banking industry has shaped in the last, shall we say, 3 years, there has been no doubt that it has been a challenging time, and I'll give you some stats to give you an understanding of what I mean when I say it has been challenging. It has seen increased oversight. There has been a rapid adoption of innovation, digital innovation at that, and there have been competitors, not in the form that we have imagined, pure banks, but come in new forms. Who would have imagined that tech companies would be competitors to banks? It wasn't the case, 30 years ago when I joined this industry. Things are so different now. But broadly speaking, I think since the pandemic, I think the last 18-24 months, because the rate cycle, banks do well when the interest rates go up, and because we've been seeing a trend of interest rates going high, we have enjoyed the benefit of high margins. So much so that if you think about one parameter in which you gauge banks, it's the return on equity parameter. Typically, what would you look at? You would look at any bank or any investment where your return on equity or return on your contribution is greater than what it cost you, right? I mean, for a bank, thinking from a bank perspective, what is my ROE? Is it greater than my ROC? ROC standing for, return on capital. If the return on capital is roughly about 10-11%, and for a lot of time, which is about at least 15 years, since 2007, global banking ROE has been stuck somewhere around the 8 to 10% mark. So we weren't even returning our cost of capital. And that has changed in the last 24, 36 months, where today the global banking ROE print might be closer to 12%, expected 23 is around 13%. So we've done reasonably well on that parameter. There is another important parameter, again a financial parameter, which we use, which is what is your price to book. And if you think about the price to book ratio for banks, and I'm using global benchmark here, you would think that at the minimum your price should cover your book value. So P by P should at least be 1. Yeah? Shockingly, the
price to book for banks globally over several years, 10, 15 years, has been stuck in less than unity. In fact, the statistic that McKinsey quote is roughly 50% of the global banks' price to book is less than unity. I come from Barclays, our price to book is 0.6. Yeah? So this is, if you think about this vis-a-vis other industries, again you see that we've been priced so much as a utility, less as any fancy technology company. And any guesses in terms of what the price to book might be for Google or Apple? Maybe you should look that up. This is in high numbers, yeah. So nowhere close to less than unity that I'm talking about. So this is the background. So when I say challenging, we've done reasonably well on ROE, on PB, price to book ratio. It has been stuck in yearly lows, not even covering unity. And that reflects the market perception that for a long time to come, the banking industry is going to be troubled. So what do they mean by being troubled? And you can easily pick up, you don't need to be reading the Global Banking Review to be able to pick up, but there are 4 general themes that are playing out that makes the turf difficult for banks. The first is the fact that if you think about balance sheet, much of, in fact, again, I'm just briefly referencing the McKinsey report again, roughly 25% of incremental balance sheet for banks between 21 to 22 have been not booked on banks' balance sheets, but have been booked on other companies. This could be, private players. This could be, in fact, there is a secular trend that there are lots of private credit funds that now fulfill needs of, financing needs of corporates than banks. Capital markets, in fact, much of what used to be booked in banks' balance sheet now seems to be going towards capital markets. It's a good trend, but nevertheless, that's a problem for the banks to contend with. Then, if you leave around, secular factors, which is you're just having a myopic view on the industry, and you just broaden out and you look at what's happening in the industry. Macro, one secular trend in macro is that it appears to be that for some time to come, we are going to be governed by high inflation, high interest rates, etc. Yeah, and that could be positive in some cases, but at some point in time, beyond a particular net interest margin, it's hard to imagine, banks trying to take benefit. In fact, there's lots of controversy going on in the banking industry about how the price of deposits is a lot lower than compared to the rates that banks charge when they're lending out money. So one trend, of course, is the fact that we are going to be in a regime where this is going to be high interest rates for longer. The second trend is, if you think about what's happening geopolitically, there has been lots of tension, something that was unforeseen. No sooner did we emerge out of the pandemic, we had this issue with Russia, Ukraine, which is still going on. Who would have imagined a war that is going on now for at least, 18, 24 months? And immediately after that, in fact, not even immediately after that, while it's still going on, we've got to contend with what's happening in the Middle East, between Israel and Palestine. So it is going to be that there is seismic shifts in geopolitical tensions, and that gives rise to a lot of volatility. And earlier this year, you might have possibly read about issues in banking where some storied names in the US, because of liquidity issues, etc., they had to fold. For example, the Silicon Valley Bank, I don't know how many of you must have read about it. The bank collapsed and regulators had to step in to rescue Credit Suisse. So the backdrop on macro is something that is going to be, pretty uncertain, pretty volatile. Then the third secular trend is one which is closely associated to the second topic, which is the rise of technology. I think November of 2022, I think the world woke up with this new tool called ChatGPT, and suddenly it caught everybody's imagination.
And there is many things to be said generally about generative AI, but more, specifically about generative AI, and more broadly about technology and how it is important that companies, specifically banks, I think have to contend with all the volatile macro environment, banks' lunch being eaten away by technology companies and other third-party players, transactions going away to asset-light companies, etc. Amongst all of that, they also have to contend with the disruption due to technology. So this is kind of a backdrop of what's happening. Yeah? So what does the McKinsey report suggest then for banks to do? So they talk about 3 or 4 things. I'll touch on 1 or 2. One is exactly a topic on AI, which is, I think in their view, those banks that are able to contend with these new technologies and specifically able to use AI to be able to increase revenue, reduce cost, improve productivity, are possibly better positioned to try and drive the next cycle. In fact, this transition, McKinsey calls it the great transition in banking, which is essentially bank balance sheet shrinking and capital markets and those entities which are capital light earning customers' account. They call this the great transition. In order to overcome the great transition, one of the things that they recommend is to try and see how banks can engage a little more actively around these disruptive technologies, specifically AI. And the second thing is, if you think about a bank, generally there are 3 businesses, right? There is lending, there is transactions, and there is distribution, right? You lend money, that's obvious. Payments is a transaction business. And then in the third stage is distribution. You've got insurance or investment products that you distribute. This is essentially what makes up a bank. And one of the things that the study tells us is that scale is increasingly proving to be an important determinant as to whether banks win or lose. So we've got to contend amongst all this disruption that's going on. How do we build scale? Yeah? So that's the challenge that each one of us is contending. And if you were to just reflect, we're talking about global picture. If you reflect in India, I think this crescent that the Indian Ocean forms, which is essentially Singapore, Dubai, India, to some extent China, these seem to be, I think, if you look at price to earnings, price to book, in terms of banks, they're doing reasonably well. But if you look at the Western world, so I'm thinking Europe, I'm thinking US, I'm thinking Russia, they have been challenged on both counts, on PE ratios as well as price to book ratios. Yeah? So that's essentially what's going on in banking right now. India seems to be an exception. Maybe as we talk about AI, maybe we can come back and talk about why should that be the case in India. Let's go to AI. Okay, so if I were to give you some bit of views around what's happening in the challenges or trends in AI, I think one must start thinking about how it all started or what does artificial intelligence really mean. Just to level set, 1956, there was a workshop in Dartmouth College in New Hampshire. I think those folks got together and they were thinking about writing programs that could mimic human beings both in terms of intelligence and in terms of decision making. That was way back in 1956. And some bit of financial calculation started happening through. So you must have heard of a term called IRR, etc. Right? So some financial calculations were all being done, predictive, using in those first generation technologies way back in the 50s. Then came this long winter in AI, 70s, 80s, 90s. And that was because I think that many reasons. One is it required a lot of funding, a lot of capital, and because this originated in academic institutions, resources were always constrained. Then there was also rise of other technologies. For example, we saw the rise of the internet alongside
So much of resources and much of interest moved away from AI into thinking about just the World Wide Web. So that was 70s and 80s. And I think the re-emergence happened when machine learning, deep learning, neural networks came back to the scene. And if you think about just how AI has evolved over these several years, or at least if you were to pick up the emergence of AI since, let's say, 2000, the turn of the 21st century, I think certainly one must talk about machine learning. Hitherto, what was happening in AI was all about the rules and symbols, where you set up some criteria, or learning actually happened by specific rules that you coded on the platform. But with machine learning, what happened? The learning happened through just availability of data. The connections, it's called representational learning for those who are technically inclined. That was the first start of it, right? Where just by immersing itself in data, it could be possible to write programs that could understand what the correlations were and what, you could abstract it into features. Yeah? But that was also very task specific. It was only limited to certain tasks. For example, supposing you were to write something around predicting whether somebody is a better credit or not, then you had specific programs written just for that domain. Suddenly what happened, you started emerging from this what I call representational learning to something called self-learning, or there are many tools for that, but this is based on data that is also unlabeled. So you had not only the machines able to look at data that has not been labeled, not been categorized, and it has also been able to learn by itself to understand patterns, etc. And it is no wonder then that this is pretty much the talk of the town. So in banking, we think about AI in two terms. So we call it narrow AI, and which is basically weak AI or strong AI. And narrow AIs are what we use, which are to solve for specific problems. So for example, we use a chatbot to deal with client inquiries. Yeah? So that is specific task oriented. It has some bit of natural language processing capabilities, but essentially it is limited to one specific task. We have bots that we use for predicting out of pattern trends, fraud control, for example, because I don't know whether you realize, globally, fraud as a theme, if the banking revenues are something like trillion and a trillion and a quarter, just the amount of losses on fraud is somewhere around 300, 400 billion, just for the top, shall I say, 100, 150 banks. So it's a huge problem. So we've, in banks, we're deploying many narrow AI techniques to be able to predict out of pattern transactions. So that's one thing that's going on. But if you think about, strong AI, those programs or mechanisms that is able to reflect or come close to human intelligence now, that is still remains to be seen, and maybe this will not be, at least for me, not in my lifetime, though there has been, it's an aspirational thing. So what you've seen in November 22 with the launch of ChatGPT, that is still narrow AI. It is much better than the traditional AI in the sense that there are two things that differentiate some of what we are seeing now with a traditional AI. And if I can use two technical terms, one is called homogenization and the other one is called emergence. Let me talk about emergence. Emergence is nothing but the behavior of the system isn't something that you actually plan for, you've actually constructed. It evolves from within the system. Yeah. So you might have trained something for one thing, but you could deploy it for another task. So for example, supposing I have used images and I've asked or I've
ensure that this program, this AI program, is able to detect, let's say, for example, human faces. Now, I could use the same model to look at the picture and identify, let's say, the type of flora or fauna that's available in the picture. So you get the idea. So this is emergence is, you might not have specifically trained for it, but it could be deployed elsewhere, or what comes out of the system isn't something that you exactly constructed. Homogenization follows very closely from emergence. You use it in one domain, you can pick it up and use it in some other domain. For example, how about simple math, 1 plus 1? The same model could perhaps help you translate English to French. Yeah? So these are two different tasks, but you could still use the same foundational model to be able to do it. We call this homogenization. So these models that are, like generative AI or specifically ChatGPT, this is what we call as foundational models. Very different from the traditional AI, but not necessarily still strong AI, which is where a bulk of the play is. If I think about deployment challenges, there are many that I can think of. I'll just name 2 or 3. I'm also conscious of time. So the first thing is a little bit around issue around fear, right? One constraint that we often find in companies is when you talk about AI and deployment, there is fear of losing jobs, fear of data privacy concerns, and media also has to be blamed because there's been so much talk around this topic and association of that with loss of employment that is something that is very, very, very real. Our company, we've got about 30,000 people across our shared services and our commercial business. And when we talk about AI and AI helping us, do, shall I say, routine tasks, certainly, it does occur to colleagues. What happens at the end of it? Is it going to be at the cost of my role? Yeah? So that is something that's natural. So that's one large block that one have to contend with in terms of implementation challenges. The other challenge that I would talk about is one around leadership, which is if somebody were to talk about, everybody wants to get into AI, right? Much of you, if I do a poll right now and ask you how many of you want to do something around AI, my sense is 90% of the room will put their hands up. But the thing is, it's not about just doing something in AI. It is about trying to see what value we can get out of deploying that. Yeah? And in a corporate setting, this is about, we talk about profits, we talk about customer growth, we talk about ROI. So one of the things that I find very, very challenging in corporates in terms of deployment of AI is just that. How do you identify and prioritize use cases that could move your big whys? Your big whys are why you exist, yeah, whether it's because you want to serve clients better, because it makes you more productive, etc. So what are those use cases that could be used? Many times what happens is you start many experiments just because you want to be associated with it just fizzles out. I think that's possibly another thing in my experience over the last 2-3 years I find is a big challenge. Yeah, trying to pick that specific use case that could be very useful. And the third one that I will talk about is, many things have been said about it, and I'll just add my 2 cents to it, which is the issue around whether it is explainable, whether the model has got bias, whether it is responsible AI in a loose way, in a broad brush way. I think there is so much to contend with around this. For instance, if you think about biases that exist in this question, whose opinion does this model reflect? Is it the opinion of the model maker? Is it the opinion of the data that went in to train it? Is it, you've got, I think many of you might know, there is a big pool of people called content moderators who ensure where the boundaries of the model are set. In fact, they also play a role before the model can be rolled out. So you think about that, whose opinion does it reflect? And you start to begin, you can easily imagine that some of those biases that start from data carries right through. In fact, that same Stanford research contended that
Wherever there has been a human intervention after the initial phase, it's called adaptation in AI. Those models don't represent general public. They did a bit of study in terms of a survey which they did to this model, foundational model, and they polled on the same set of questions to general public, and they matched these results. And lo and behold, the result was that the models seemed to be so much away from what, on an average, the general public were saying, because there has been some layer of filtering that has happened by the data modeler, by the content moderators, etc. So, there are many issues to contend with in terms of AI before it can be launched. The one other aspect that I can think about is, just think about how this generative AI thing has started. If you think about the machine learning, traditional AI view of the world, that started in academic institutions, that started in terms of open source. So much so, if I said TensorFlow, which is basically a program or a set of library, it's an open source thing, where it is easy for you to know, what is others' work, and you can actually develop further or you can improve it. It was open source. But if you think about how some of these new models are coming, it's concentrated at the hands of some of the big and the mighty, some of the big technical companies are driving it, some of the well-funded startups are driving it. It isn't possible for anybody with that kind of financial resources to be able to either validate, because you won't have access to the training data, right? So much so, there is a view that just like if you go to a store and you look at something to eat, there is a nutritional label. It is said that even for AI models, we should have a label which talks about what kind of data was being used and what is it, even to ask a simple question. Maybe you should go home and ask ChatGPT a simple question. What are you capable for? You might get surprising answers depending upon how you prompt it. Yeah? So there are lots of things to contend with. So it's not a new fancy that has caught public imagination and immediately the bank rolls out. I think there is a journey before that can be industrialized, before it can be deployed in an institution that is known for a trust. So in summary, what do I want to say? First, on challenges in banking, I think this is around a volatile macro environment. This is about how do we grow when some of these big tech companies are eating our lunch. That's kind of the background. In AI, what's the trend? What's the challenge now? Who set the rules? Yeah, everybody believes that this is going to be beneficial, but will it come at the cost of roles? There's a lot that's going on around just what side of the equation we will end up should AI were to flourish without any guardrails. Yeah? Should government intervention, should policy intervention at all happen or not? I think banks are caught up in that same discussion, dialogue. There is, the last word is certainly not out on this chapter. In the meantime, we are experimenting with our own narrow AI concept where we use some predictive models to be able to solve problems that we can contend with. Yeah? So thank you for the opportunity. It's a pleasure. Thank you, sir, for throwing light on banking industry and artificial intelligence. Believing in yourself is an important part of life. Your words were really inspiring for all of us in the auditorium. It is my great honor to welcome our respected guest of honor, Dr. Bhavesh Bhatia. Dr. Bhavesh Bhatia is the founder and CEO of Sunrise Candles, working for empowerment of visually impaired. He is the chairman of Paralympic Committee in the visually impaired category, brand ambassador of National Association for the Blind, Maharashtra State,
Joint Secretary of National Association for Blind Unit, Maharashtra, representative of Samaj Kalyan Vibhag, Palak Mantri Samiti for Satara district. He is working with 250 plus NGOs for their skill development, training and Make in India project. Dr. Bhatia has also been invited as a key speaker at Google, Microsoft Josh Talks, Swayam Talks, Inc. Talks, Success Gyan, National Achievers Conference, BNI, CEO Club, Saturday Club and 2000 plus awards and felicitations. He has climbed Mount Kilimanjaro in Africa twice. Stock Kangri, Leh Ladakh, Mira Hill and Island, Nepal, and Maharashtra's highest peak, Kalsubai, 9 times. Sir has also been the founder and president of Oceanic Vision for the Blind Welfare Society for 11 years. He has received 3 international, 18 national awards and the prestigious Presidential Award Rashtrapati Puraskar thrice in 2014, 2016 and 2019. Dr. Bhatia started his social entrepreneur journey on a handcart at the Mahabaleshwar market in 1994 with one single candle design and 20 kgs of wax. Today, after 28 years, more than 10,700 designs of aroma-scented candles are manufactured and more than 9,500 visually impaired have benefited. Generating huge employment for the blind and Divyang people. Dr. Bhatia is not only a successful entrepreneur but also a successful sportsman, trekker, poet and shire and has written more than 5,000 shairis. We are honored to have you and we warmly welcome you, sir. I request, sir, to address the gathering and it would be great if you could share one of your favorite shairis with us. रिस्पेक्टेड राम गोपाल सर के बाद मैंने कुछ कहना, मतलब सर मैंने सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन सबसे पहले मैं एनजेवाई सर की उस पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और आदरणीय मंच और आईबीएफ से जुड़े हुए आप सब मित्रों की उपस्थिति में जो जबरदस्त ऊर्जा, जो जबरदस्त एनर्जी इस पूरे माहौल में मैं महसूस कर रहा हूं, उसके लिए शुरुआत में मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, हम खुशबू की तरह फूलों से उड़ते हैं और ये अंधेरे की कैचियां हमें खाक रोकेगी, हम पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ते हैं। ये विजन ही है, ये एनजेवाई सर का विजन है ज्योति बहन कि हम सब इस सभागृह में उपस्थित हैं। मार्क ट्वेन भी तो यही कहते थे, जो अमेरिका के प्रसिद्ध जो राइटर हुए, कि इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसका बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है। दिखता नहीं दिखता, साइट है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है विजन से। और मैं तो कहता हूं कि बिना विजन की जिंदगी
मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं है। वॉरेन बफेट से लेकर रॉबर्ट क्यूस्की तक ने दुनिया की ऊंची से ऊंची इमारत की टेरेस पे खड़े रहकर एक ही बात कही कि जहां पर क्राइसिस है, जहां पर हर्डल्स है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज है। और इस हर्डल्स के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कर्नल सर कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जिंदगी का खारापन है, ये जिंदगी के जो हर्डल्स है, ये क्राइसिस है, ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, हमें और ऊपर उठाने के लिए है। माता पिता की इकलौती संतान, डेढ़ी दिहाड़ी मजदूर, लेकिन जिंदगी में जब जब हर्डल्स आए, स्पीड ब्रेकर आए, बचपन से माँ ने मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कही कि भावेश तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हटके करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता, एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। बात निकली है तो कुछ रिसर्च वाली बात भी बता दूं कि जब मां सर पर हाथ फेरती है ना तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीवी सर पर हाथ फेरती है, मेरे पास गर्लफ्रेंड वाले भी रिसर्च है, अगली बार कभी जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। मां के आशीर्वाद ही थे कि 16 साल की उम्र में आफ्टर 10 विथ माय वन साइटेड फ्रेंड, जिसको एक ही पैर था, हम दोनों ने मिलकर टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, और पीछे बैठ के मैं पैडलिंग करता, और विदर्भ, नागपुर, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस नागपुर, हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक के साथ कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। लेकिन सौमित्र भाई साहब, ये हर्डल, स्पीड ब्रेकर, तकलीफ, ये जो शब्द है ना, कभी अकेले नहीं चलते, ये पूरे झुंड में चलते हैं। एक तरफ एमए की फर्स्ट क्लास की 2 डिग्रियां थी, लेकिन मां नहीं थी। उन्हीं दिनों मां का 4 स्टेज ब्लड कैंसर से निधन हो चुका था। इन तकलीफों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था, लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था, दोस्तों रिश्तेदारों ने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। लेकिन बचपन से क्रिएटिविटी की चाह, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल छूने को मिली, टच करने को मिली, तब क्लियर था विजन के इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और मां के कहे हुए अंतिम शब्द के कुछ अलग करने की कोशिश जरूर करना। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई के किसी पुनर्वसन केंद्र में एक प्लांट कैंडल की ट्रेनिंग ली, और 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, वो भी मेरे पास नहीं थे, तो मसाज वगैरह करके मैंने 5000 रुपए जोड़े, और उस 5000 रुपए में से उस छोटे से भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की शुरुआत की, एक डाई, कुछ 18-20 किलो कच्चा माल। लेकिन उस हैंड कार्ड पे भी अगर एक मेरा काम मैंने जो ठीक किया वो ये था कि जो भी सामने ग्राहक आए, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की, उनको दिल से जोड़ने की कोशिश की, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ही सलाह दी कि देखो भावेश, आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, सफल होना है जिंदगी में, तो सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, आज तक मैं अपने प्रोफेसरों को नहीं समझ पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार संजोगवश वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन कर्नल साहब, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दिल भले हमारा लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। आज दुनिया बदल गई, लेकिन आज भी लोग ग्राहक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक बात ऐसी घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। मेरी वाइफ नीता उन दिनों मुंबई से एज ए टूरिस्ट महाबलेश्वर आई हुई थी। 8-8, 9-9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस,
मुझे जब उस फुटपाथ पे उसने अकेले देखा तो रोज शाम को आके उसने मुझे हेल्प करनी शुरू की। काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। 18 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे और 19वें दिन शायद मेरी खूबसूरती काम कर गई। उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। क्योंकि मुझे पता है बच्चों को यही सब चाहिए, उनको और कोई नॉलेज वगैरह की। अच्छा इरफान भाई साहब, वो अनारकली के लिए एक मुगल बादशाह थे, लेकिन मेरे लिए मुगल बादशाहों की फौज थी। इन लोग कहाँ मानने वाले थे कि इकलौती लड़की वो चाहती है कि एक स्ट्रीट वॉकर से शादी करे जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसको दिखता नहीं है। उन्होंने भी शर्त रख दी कि चलो अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद शादी। उनको लगता है एक साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह मैं अपनी जगह। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान, हर हफ्ते मुंबई पहुंच जाता उससे मिलने के, कहीं वो अपने विचार न बदल दे। अब एक स्ट्रीट होकर पैसे कहाँ से निकाले, तो आजू बाजू के और जो फेरी वाले थे उनसे उधार के पैसे लेके मुंबई जाना। उधार के पैसों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बॉम्बे जाते जाते मेरे दिल की हर धड़कन एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है। वो सच सूझे पराया भी बहुत लगता है, और तमन्ना ये है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं आने जाने में किराया भी लाइनों को रट्टा लगा लेना, आपको आने वाले दिन में बड़ी काम आने वाली है। आज 27 साल हो गए। आज मीता मेरी वाइफ के लिए मैं इतना ही कहता हूं कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं। खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब जब 1 साल के बाद हमने शादी की तो मैं नहीं चाहता था अपने घर से 1 रुपया भी लाए। मेरी इन भावनाओं की उसने बड़ी कदर की, और महाबलेश्वर के स्कूल के किसी क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। और पुनः भाई उस फुटपाथ पे मैंने और मेरी वाइफ ने जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन हम यहाँ खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते, और तभी लकड़ियां पटकते हुए और मेरे ब्लाइंड मित्र भिक्षा मांगते वहां से निकल जाते हैं। बड़ा दुखद होता था। ऐसे ही 5 दोस्तों को हमने 300 रुपए उन दिनों रोज के देने, उनके रहने खाने की व्यवस्था का वादा करके साथ में लिया। ये ब्लाइंड नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। अब बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार्ड और बनाने के लिए इतने सारे हाथ हो चुके थे। रोज के पैसे देना, वर्कशॉप का भाड़ा, कच्चा माल मंगवाना, उनका खाने रहने की व्यवस्था करना, जो भी बचत थी बड़ी स्पीड से खत्म हो रही थी। तब लगा ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आज नहीं तो कल इसको बंद करना पड़ेगा। और उन दिनों मुझे बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें पहली बार सही लगने लगी। जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको अक्सर सुनना पड़ता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उन दिनों मुझे लगा कि वे ठीक ही कह रहे थे। दिमाग में तो कहीं बात चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई कुछ और कह रही थी कि ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और उन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा बनी। और इन दिनों मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का रेडियो पे एक स्पीच सुनी थी। उनकी एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस लाइन से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जहां एक टेबल मिली हमने शोरूम खड़ा कर दिया, जहां एक कमरा मिला हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। कंपनी को डिजाइन इस तरह से किया गया कि कोई मालिक नौकर, कोई एम्प्लॉयर न हो। जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था नंग पे डाला गया, मार्केटिंग पूरा डिडक्शन पे, बनाओ उतना आपका, बेचो इतना आपका। महाबलेश्वर से आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट होते हुए आजू बाजू के राज्यों के हमारे ब्लाइंड मित्र जुड़ने लगे, और हर कोई जितना मेहनत करता उतना रिटर्न पा रहा था, तो हर कोई अपना 100% देने लगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हजारों की संख्या में डिजाइन हम प्रोड्यूस करते हैं। 70 से ज्यादा देशों में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। एक 25-30 हजार से लेकर 70-80 हजार रुपया मेरा हर एक इंडिविजुअल ब्लाइंड
महीने की इनकम पा लेता है, जो कभी भिक्षा मांग के अपने पैर पे खड़ा था, जिनको घर संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके वे अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर खुदा का थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों याद रखें, कोई भी अपॉर्चुनिटी संधि तक आके कभी हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब 2008 में रिलायंस की तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल बीकेसी में ये अवार्ड दिया गया माननीय नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जी के हाथों। वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर फंक्शन के बाद मेकर चेंबर नरीमान पॉइंट की अपनी बिल्डिंग ऑफिस में ले गए। मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि अंबानी साहब चाहते थे कि ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है, हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी कि किस बाहरी की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो, बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो मांग लेना, रिलायंस आपसे बड़ी खुश है। मैंने वो कवर उनको वापस देते हुए कहा नहीं सर, मुझे पैसे नहीं देना चाहते हो तो काम दीजिए, इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे सिस्टर कंसर्न, कितना गिफ्ट आर्टिकल आपको लगता है, तो हमारे कैंडल्स का उपयोग क्यों नहीं करते? इसमें उजाला है, इसमें खुशबू है, और पीछे अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस की हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। आप तो खुद सब लोग खुद मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। आगे चल के आप भी बड़े बड़े बिजनेस शुरू करोगे। मुझे बताइए इससे बड़ी बिजनेस की या इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक लौटा कर, मैं तो यूं कहता हूं कि 51 लाख का चेक ज्योति बहन हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, और 2008 से टिल टुडे उस 51 लाख के सामने करीब 135 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस हमारी कंपनी में कर सकती है। लेकिन मुझे पैसे लौटाने का उतना ही फायदा नहीं था। जब आकाश अंबानी जी की 11 मार्च 2019 में शादी हुई तो उन 25,000 वीवीआईपी लोगों में हमें भी बुलाया गया, मुझे और मेरी वाइफ को। 2018 में मेरी बायोग्राफी रुझान ने पीएम सर ने पब्लिश की दिल्ली में, और 2020 में गवर्नर महाराष्ट्र ने 15 दिसंबर को जो मराठी आवृत्ति पब्लिश की, उसकी प्रस्तावना प्रीफेस मान्यवर नीता अंबानी जी ने लिख की दी। वैसे मेरी वाइफ का नाम भी नीता है, आप सब जानते हैं। वो हर बार कहती है कि नीता भाटिया भी नीता अंबानी जी की तरह बड़ी खुश है, लेकिन एक लाइन में उसमें जोड़ देता हूं कि जिनकी धर्मपत्नी के नाम नीता होते हैं वो हस्बैंड सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया हाथ में तो काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। फार्मास्यूटिकल, होटल ग्रुप, काफी बिल्डर, सब काफी लोगों से हमें काम मिले। कंपनी के ट्रेडमार्क, सिंबल, हर चीज हमने मोम में बनानी शुरू की। सुला वाइन की वाइनरी से लेके हर चीज, फार्मास्यूटिकल की टॉनिक बोतल तक हर चीज हमने मोम में ढाली। 2014 में हमने किंगफिशर जो कंपनी है उसके लिए 3.5 लाख गियर मग बनाए थे। मैं आपको एक दिखाने के लिए लेगा, अभी इसको देख के मुंह में पानी लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोम से बना हुआ है और ये चिल्ड भी नहीं है ना। ऐसे 3.5 लाख गियर मग हमने किंगफिशर के लिए बनाए थे। लेकिन ज्योति बहन, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर खुदा का कोटि कोटि धन्यवाद देते कि मालिया जी भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए। मैं प्रज्वल और प्रणव भाई के साथ में इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता वसूली के लिए। आज 500 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हमें केस स्टडी करती हैं। उन तमाम स्टूडेंट्स से मैं एक ही बात कहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है बेचना। अगर आप बेच सकते हो तो बनाने की ओर अग्रसर होइए, नहीं तो आप आपका वक्त जाया करते हो। दुनिया की किसी भी भाषा को उठा ले, हमें ये कहावत मिलेगी कि आप बेच सकते हो तो मिट्टी भी बेच सकते हो, नहीं तो आप सोना भी नहीं बेच सकते। तो मार्केटिंग सबसे जरूरी है, यही हमने सीखना है दोस्तों। 2012 में जो आमिर खान जी की सप्तम बेटे सीरियल बड़ी पॉपुलर हुई, उसकी एक आधे घंटे का एपिसोड सनराइज कैंडल पे बना के यूट्यूब पे शायद वो वीडियो भी अवेलेबल है। 2014 में हमें पहला बेस्ट क्लाइंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया विज्ञान भवन में। बड़ी खुशी हुई कि चलो एक नेशनल स्तर पे सराहे गए।
लेकिन दिल्ली से लौटकर कर्नल साहब मैंने तमाम स्ट्रीट होकर को ढूंढा महाबलेश्वर में जाके, जिन्होंने सिर्फ वो छोटी सी जगह खाली कराने के लिए कितनी बार मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी। उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और उनको मैंने एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रहती तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। आपने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। सौमित्र भाई साहब, स्वामी विवेकानंद जी इस मानसिकता पे बहुत प्यारी बात कहते थे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही गलत है। और इसके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना, अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। 16 में 58,000 नॉमिनेशन में से हमें एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के लिए दूसरा नेशनल और 19 में रोल मॉडल इंडिया का तीसरा। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड से आज यहां तक का जो सफर है, कर्नल साहब मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि उसमें एक ही शब्द काम आया और वो था हार्ड वर्क। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस हार्ड वर्क, इस मेहनत पे इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज आप इस ऑडिटोरियम सभागृह से कुछ मत लेके जाना, लेकिन मेरी ये 4 लाइनों को आपके साथ बांध कर लेके जाना कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है। ये जो दिया है मोमबत्ती कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रोंदी गई पैरों तले वो कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। आज मुझको लगता है लिफ्ट में जाए, बटन दबाए और रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंच जाए, लेकिन ये स्टेप करके आगे बढ़ने की जो खुशी है ना, बहुत बड़ी है। हमने नहा कि हमारे चारों ओर एसयूज और वाहनों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी ना, दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, गरीब परिवार से, किसान के घर से। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन मैं समझता हूं जो है बेस्ट है। नहीं तो एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की दो फर्स्ट क्लास की डिग्रियां, मैं भी किसी कोने में क्लर्की करता होता, लेकिन ये हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो सकती। काफी स्टूडेंट से मिलता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी बातों में हताशा, डिप्रेशन का ऐसा माहौल बन चुका है ना। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप हो गए और मुंह लटका के बैठे हैं, कहीं एक आधा सब्जेक्ट रह गया, मुंह लटका के बैठे हैं। हम सब कुछ सीख गए लेकिन हार बर्दाश्त करना नहीं सीख पाए। कोटा के रोज के न्यूज हम सुन रहे हैं। वो 3 इडियट वाली फिल्म मेरी वाइफ के साथ मैंने देखी थी। उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बना के उड़ाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया, वो बना भी लेता है, उड़ा नहीं पाया तो क्या करता है, पंखे से लटक के खुद उड़ गया। और ये बहुत गलत है। इतना जल्दी हम गिव अप कैसे कर सकते हैं? हम ये बिल्कुल यकीन से हम ध्यान रखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम जहां भी शुरुआत करेंगे सफलता ही सफलता हमें मिलेंगी। पहले असफलताएं भी मिलेगी, उसको स्वीकार करना सीखे। और असफलताओं की बुनियाद पे तो सफलता की इमारतें खड़ी की जा सकती है। भगवान न करे, खुदा न करे, आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आए, आज के दिन को याद करके चाबी के उस गुच्छे को याद कर लेना जिसमें 40, 50, 60 कितनी भी चाबियां होती है, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और जो आज भी हताशा, डिप्रेशन में कहीं बैठे हैं, आपके माध्यम से उनको एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह। एनजेवाई सर जो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा होता है। भले ओम शांति ओम में शाहरुख खान उसको कायनात का नाम दे दे,
और ओशो, आचार्य रजनीश उसको अस्तित्व का नाम दे दे, हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि एक ताकत है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। दूसरे की बुराइयां और दूसरे की वीकनेस ढूंढते ढूंढते फिर जब जाने का वक्त आ जाता है ना, तो इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा। अच्छा ज्योति बहन, ऐसे काफी स्टूडेंट से जब मैं हाथ मिलाता हूँ ना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां, आपको पता नहीं, हमने भी बड़े पापड़ बेल लिए, बड़ी मेहनत कर ली, एग्जाम सक गए, बस इन ग्रहों के ऊपर में हमने भरोसा छोड़ा, वही नैया पार लगाया। वापस मुझे समझाते कि देखो सर, ये लाल वाला पत्थर का टुकड़ा मंगल ग्रह का है, सफेद वाला किसी और ग्रह का। दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपने अंगूठियों में सजा रखे हैं। मैं उनसे कहता हूं ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? जो अच्छा बुरा करना है हमने खुद में करना है। मराठी साहित्य में वामन राव पै हुए क्या बात कहते हैं वो जबरदस्त, कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। लेकिन जो आज भी अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं, उन तमाम मित्रों को इस मंच से मैं कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं। अरे शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से स्पोर्ट्स करीब करीब निकल चुकी थी, लेकिन 26-27 की उम्र में जिस एज में करीब करीब स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं, उस एज में मैंने डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक खेलना शुरू किया। गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक मेरे पसंदीदा खेल थे। 2000 में पहली बार स्टेट, 2001 में बेंगलोर में पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला और 2002 से टिल टुडे मैं शॉर्ट पुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं दोस्तों। अब तक 117 पैरा ओलंपिक 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हुए। कुछ आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। 117 मेडल्स। ये मेडल्स मैं अपने बड़कपन के लिए नहीं दिखा रहा हूं दोस्तों। जब मैं अगली बार आऊं तो मुझसे ज्यादा मेडल्स आपके पास होने चाहिए। बस आपके साथ मैं कंपटीशन लगाने के लिए आऊं मैं दोस्तों। एक बात ध्यान रखें, बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। जब पहला नेशनल गोल्ड आया तो मेरी वाइफ ने कहा आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम तक जाना पड़ता है, कितना अच्छा जिम ही आप तक आ जाए। उसने घर पे एक जिम लगा दी। अब परिस्थिति है कि सुबह 4 से 8 जिम में रहना पड़ता है, उसके बिना नाश्ता ही नहीं मिलता। और आपको लेट हो गया, नहीं जा पाए और फिर नहीं मिलता नाश्ता क्योंकि एग्रीमेंट है, फिर बड़ी मिन्नतें करो, बड़ी खुशामतें करो तो आधा सा पराठा दे दिया जाता है दया दृष्टि दिखाते हुए। उस आधे से पराठे की प्लेट को लेके जिम के किसी कोने में खड़े खड़े चुपचाप खा लेता हूँ और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन परेशानियां तो मेरे स्पेन के कोच ने बढ़ा दी, जो साई की तरफ से मुझे मिला हुआ था। वो रोज मेल करके कहता कि अब क्या 50 की उम्र में भी आज भी 350-400 पुशअप्स लगाता हूँ दोस्तों मैं। और वो उसके बाद वो कहता है कि आपने दौड़ना भी चाहिए, आपने ग्राउंड प्रैक्टिस भी करना चाहिए। रोज मेल करता मेरी वाइफ को कि साई को रिपोर्ट्स भी भेजने होते थे। अब कोच कहता है तो करना पड़ेगा। मेरी वाइफ ने अपने नई कार को एक नया कैरियर भी लगाया और मुझे उसमें बिठाकर महाबलेश्वर के पोलो राउंड में ले गई। उसने कहा 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड लगाओ, तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। ऐसा कहते कहते उसने कार की डिक्की में से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली, एक छोर कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो। मैं भी बड़ा गदगद, क्या दिमाग पाया मेरी धर्मपत्नी ने। लेकिन ये खुशी इरफान भाई साहब सिर्फ 7 दिन टिकी। 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है। उस दिन से मुझे उससे बहुत दब के रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को रहना पड़ता है दब के अपनी वाइफ से, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि आज गलती से उसके सामने जरा भी जोर से बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। दोस्तों ये ट्रॉफी, अवार्ड्स, मेडल्स के बारे में जब सोचता हूं तब लगता है कि दिस आर ऑल बाय प्रोडक्ट। सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना
आज हजारों मेरे दृष्टिबाधित और दिव्यांग मित्र जिनको कोई इंसान समझने के लिए तैयार नहीं था, उनके लिए जो ये रोजगार है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी इन ट्रॉफी मेडल्स अवार्ड्स के लिए तो मैं मजाक में इतना भी कहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। प्रकृति हमें कितना सुंदर सिखाती है, जब पेड़ों पे फल लगते हैं, ब्रांचेस झुकती हैं, तो हमारे भी व्यक्तित्व को जब सफलताओं के फल लगे, हमने झुकना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके विपरीत समाज में आज किसी ब्लाइंड को कोई रास्ता भी क्रॉस करा ले तो उसको लगता है कि ईश्वर खुदा बनने से मैं फुट भर पीछे रह गया। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाउसफुल 4 में कहते हैं ना कि कभी कभी तो लगता है अपुनज भगवान है, ऐसी हालत हो चुकी है। और ये स्वयं घोषित भगवानों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, तेरे हाथ के तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और साख के सब फूल अकेले हो गए, क्योंकि गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। और शिव बनना है, शिव बनना है, शिव बनना है तो पहले विषपान भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जामुन खाए और होठ नीले हो गए। आज सोसाइटी में सिर्फ पैसों को हमने एक दूसरे को मापने का एक मापदंड बना लिया है। किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, चारों ओर सिर्फ पैसा पैसा पैसा। जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए दोस्तों कि फिर उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। आज पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब सनराइज कैंडल हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं है, एक यज्ञ है, एक चढ़वड़ है। मैं कर सकता हूं तो मेरे और दोस्त क्यों नहीं कर सकते? लेकिन दूसरों की मदद करनी है ना, तो पहले हमने सक्षम बनना पड़ेगा। मुझे तो आपसे ईर्ष्या हो रही है कि IBSRI के इतने प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला मिला हुआ है, इतने प्यारे टीचर्स हैं, इतने प्यारे लीडर्स हैं आपके लिए। इनका पूरा पूरा फायदा लेके आगे बढ़िए। आप अगर मजबूत बनेंगे, आप ताकतवर बनेंगे, तभी तो समाज में जो पीछे छूट गए, कमजोर हैं, उनकी आप मदद कर पाएंगे। बस इस उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें आप। जो अभी बहन ने कहा कि जो माउंट किलिमंजारो से लेके बहुत सारे बेस कैंप, एडवांस कैंप, माउंट एवरेस्ट भी हुआ, ये सब फोटोग्राफ्स देख के मेरे काफी दोस्त मुझसे कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता? हाथ स्लिप हुआ तो गए नीचे। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। यहाँ बैठे हुए कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस ईश्वर ने बिल्कुल हमारे बीच में रखी हुई है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उस वीकनेस को, उस कमजोरी को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे जो मुझे बुलाया और इतने प्यारे वातावरण मुझे कुछ देर रहने का मौका मिला, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इरफान सर। आपका तो बहुत धन्यवाद कि महाबलेश्वर से कब चले, कहाँ पहुंचे। इरफान सर, आपने कितना ध्यान रखा। हमारी साक्षी बहन, प्रणव भाई साहब, प्रज्वल भाई साहब, आपने कितना सपोर्ट किया। ज्योति बहन, जो श्रद्धा, जो रिस्पेक्ट मुझे NJY सर के लिए है ना, वो मुझे आज बिल्कुल कहने के लिए विवश कर रही है कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में भूत बनकर बैठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। और सदियां बीते, अरे सदियां बीते, जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी NJY आप घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे। जो दिखता नहीं दिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है विजन से। हम गोल, उद्देश्य, टारगेट दुनिया भर के नाम दे दें, लेकिन जिंदगी में उद्देश्य का, गोल का, विजन का होना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य, इसी गोल, इसी विजन के लिए मेरी पसंदीदा 2 लाइन कह के मैं रुकना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ, अरे मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहां है,
लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है। सर, जिस प्रकार आपने अपने जीवन की बाधाओं को पार किया है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ बैठे सारे लोग अपनी अपनी जीवन की बाधाओं को ऐसे ही पार करेंगे। एडिंग टू इट, अकेला ही निकला था घर से जनाबे गालिब, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मैन ऑफ द मोमेंट, डॉक्टर भावेश भाटिया। As we close today's event, we would like to extend our sincere gratitude to our esteemed guest. I request Professor Samadar to present a memento to Mr. Ram Gopal. Thank you, sir. I request Professor Colonel Ram Gopal to present a memento to Dr. Bhavesh Bhatia. Thank you, sir. I invite Professor Ravi Venkat Reddy to kindly propose a vote of thanks. So, before I start, how many of you want Neeta as your partner? I can see most of the hands here. Only one hand. Yeah. You also? Done. So I won't be taking much time. So respect your dignity. And my fellow faculty members and non-teaching staff and my beloved students. So we are all, we gather together to remember our great personality and one of the nothing but digital, or we can say that an educationalist whose main objective is to ignite young minds. So first, I take this opportunity to thank our chief guest, Ram Gopal sir. You are insightful, and we are very privileged to get some insightful inputs from you. And so you spoke about banks, and you spoke about AI, and you also spoke about ChatGPT. But one thing, what I can assure you that most of our students are experts in Java. Because they use ChatGPT for their internal assignments, they use their ChatGPT for Viva, and they use their ChatGPT for all kind of college assignments. So they are very much motivated with
ChatGPT. So I think we may get one person who might step into the shoes in a banking employee, and maybe the credit profiling can be done by using ChatGPT and AI. And our guest of honor, Bhavesh sir, it's a privilege to have you here. We had a great learning. I don't want to take much time. We had a great learning. Just I want to codify this particular great learning in one line. So what I understood from your 30-minute speech is the challenges in life is just like a comma, but not a full stop. So this is my learning from your 30 minutes. So you inspired us. Thank you very much. And even I am also planning to learn some sharis. So maybe, if possible, before leaving IPS Pune, definitely I will be learning some sharis. Thank you very much for that. And yes, I am very thankful to Irfan sir and all the volunteers for making this event possible. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Request all to stand for the national anthem. Not loud enough. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! I request all the dignitaries, faculty and staff members to kindly proceed in the lobby area for high tea. Requesting all the students to be seated.